Hello and welcome to Oliveboard. My name is Hardik Mishra and this video is about how to improve vocabulary easily. See, I have made this video on a very popular demand because a lot of aspirants, a lot of candidates, a lot of students have been asking me, sir, how can we improve our vocabulary easily? How can we have good vocabulary? So this video is dedicated to all those aspirants, all those candidates, all my students who want to improve their vocabulary. Okay, so let's just get started. But before we start, just let me request you, please do like this video, share it with your friends and subscribe to Oliveboard. Okay, so let's just start with the video. But before we start, a very important thing that we need to understand is why do we need to improve our vocabulary? Okay, so we should see what are the benefits of having good vocabulary. See, the first benefit is read important books. See, if you will have a good vocabulary, you will be able to read important books which are important for your personality development, for your skill development, for the growth and for increasing your knowledge. The second important thing is you will be able to enjoy movies and songs well if you have good vocabulary, and at the same time you will also be able to have good pronunciation. सी बहुत जरूरी होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एमिनेंट पर्सनालिटीज। नाउ एमिनेंट का मतलब क्या हो जाता है? फेमस, जो बहुत ही मशहूर लोग हैं, उन पर्सनालिटीज, उन लोगों की जो स्पीच है उसको भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ कंटेक्चुअल यूसेज ऑफ वर्ड्स। सी, कंटेक्चुअल यूसेज ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कोई भी एक वर्ड है, एक वर्ड लेते हैं लीव्स। अब लीव्स दो तरीके से यूज हो जाता है। लीव्स का मतलब हो जाता है छोड़कर जाना, टू गो अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, या फिर एक दूसरा मतलब हो जाता है लीव्स का मतलब पत्तियां हो जाता है। ठीक है, पेड़ों पौधों में पत्तियां होती हैं, उन्हें भी हम लीव्स कहते हैं। तो ये कंटेक्चुअल यूसेज होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है स्टेट। अब स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट का एक मतलब हो जाता है राज्य, स्टेट ऑफ मैटर हो जाता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो भी स्टेट है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से स्टेट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सेकेंडरी मीनिंग्स। ठीक, लेट्स टेक अ वर्ड एपिटमी। एपिटमी का मतलब क्या होता है? एपिटमी का मतलब हो जाता है, दो मतलब होते हैं एपिटमी के। एपिटमी का एक मतलब हो जाता है आइडियल और परफेक्ट एग्जाम्पल। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। महात्मा गांधी इज एन एपिटमी ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब क्या हो गया कहने का कि महात्मा गांधी जो है वो क्या है? एपिटमी है, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके? नॉन वायलेंस के। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइट द एपिटमी और द एपिटमी ऑफ दिस होल स्पीच, दैट इज द समरी। सो अब दो मतलब हो गए, दो मीनिंग्स हो गए एपिटमी के। एक मीनिंग हो गया समरी और दूसरा मीनिंग हो गया आपका आइडियल एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी मीनिंग्स भी सीख सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट क्विकली कम टू टेक्निक नंबर 1, जो कि हम यहां पर देखेंगे कि क्या टेक्निक हो सकती है अपनी वोकैबुलरी को यूज इंप्रूव करने की। तो पहली टेक्निक देखते हैं, विच इज लर्न थ्रू रूट्स। अब रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट वर्ड्स होते क्या हैं? रूट वर्ड्स सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज हो सकते हैं। ठीक है, पहले या बाद में वर्ड के लगते हैं और वो जो है एक रूट आप याद कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है, और उसके हिसाब से आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक पहला वर्ड लिखा हुआ है, कुछ रूट्स लिखे हुए हैं आपके पास, EU, एम्बी, एंटी और मैल। EU का मतलब क्या हो जाता है? गुड या फिर वेल। वहीं एम्बी का मतलब क्या हो जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बी? एम्बी मींस बोथ। एंटी का मतलब हो जाता है अगेंस्ट, और मैल का मतलब हो जाता है बैड। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे EU से बनने वाले वर्ड्स, यूफोरिया, यूपेप्सिया, यूलिजी। यूफोरिया मींस हो जाता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ओके, गुड वर्ड है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। यूपेप्सिया, अब पेप्सिया का मतलब हो जाता है डाइजेशन, और यूपेप्सिया मतलब गुड डाइजेशन। यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब हो जाता है प्रेज, किसी को बहुत ज्यादा तारीफें करना या उसकी प्रेज करना।
इसके बाद देखते हैं एम्बी। एम्बी का मतलब बोथ। अब इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंट और एम्बीवर्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। एम्बीवेलेंट मतलब जिसके अंदर दोनों दो तरीके के थॉट्स हैं, यस नो बोथ, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवर्ट जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, वो एम्बीवर्ट हो जाता है। एंटी की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एंटी, एंटी मींस अगेंस्ट। एंटीसेप्टिक मतलब वो दवाइयां जो सेप्टिक होने से बचाएं, वो एंटीसेप्टिक है। एंटीपैथी, एंड पैथी मींस फीलिंग एंड एंटी मींस अगेंस्ट। तो नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स समवन इज एंटीपैथी। एंटी टेररिस्ट तो आपको पता ही है, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैल। मैल का मतलब होता है बैड। किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको मैल, MAL मैल दिखता है, मतलब वो नेगेटिव है। मैल नरिशमेंट मतलब के नेगेटिव नरिशमेंट। मैलेडिक्शन, डिक्शन मतलब हो जाता है बोलना या बताने से रिलेटेड, तो मैलेडिक्शन मतलब किसी के लिए कुछ गलत या कुछ खराब बोलना। मैल प्रैक्टिस यानी कि गलत तरीके की एक्टिविटीज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। एक और वर्ड है मलेरिया। मलेरिया जब इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं थी, तो लोगों को लगता था कि बैड एयर की वजह से होती है ये बीमारी, इसीलिए लोगों ने उसका नाम मलेरिया रख दिया, ठीक है। बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि ये मस्कीटो से होता है, लेकिन नाम को चेंज नहीं किया गया, तो वो मलेरिया भी मैल ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक है वो है टेक्निक नंबर 2, लर्न वर्ड थ्रू इमेजेस। अब इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर हम बात करते हैं हमारी वोकैबुलरी के इंप्रूवमेंट में। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो भी आप इमेज ले रहे हैं, you take those images very carefully and look at those images very carefully and try to memorize the word, try to associate the word with that particular image, and in that particular way you will be able to learn the word very easily and for a long period of time. Always remember, either you are you are learning words through root or you are learning words through images. Always make short sentences which you will be able to remember. Okay, so आप short sentences बनाएंगे, those sentences you will be able to remember for a long period of time. Let's just take an example. Over here you can see there is a sentence written, police brutality in recent months has turned quotidian. अब यहां पर आपके पास दो इमेजेस हैं। ब्रुटैलिटी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं एक पुलिस वाला है, and that policeman is thrashing these people. Okay, so this is called police brutality. quotidian की बात कर लेते हैं, तो quotidian क्या हो जाता है? अब ये गाना, दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। तो जो किसी का रोज का काम हो, एवरीडे एक्टिविटी, दैट बिकम्स quotidian, ठीक है, दैट बिकम्स quotidian. हम in our day to day life also we say it is a quotidian activity, that means ये उसका रोज का काम है. I hope you've understood this. Clear everyone? Okay, so we will quickly move to the third technique, which is read anything and everything of your choice. See, a lot of people have been asking, sir, what to read, what should be the source. Okay, so don't worry about the source from which you need to read. Always worry about the area of your interest. For example, you want to read about sports, that is your area of interest. You want to read about entertainment, that can be your area of interest. You want to read about politics, that can be your area of interest. You want to read about economics, you want to read about commerce, that can be your area of interest. You want to read about technology. So if you are clear with what is your area of interest, sources are unlimited. You have online newspapers, you have books, you have novels, you have journals, you have blogs, you have online articles, you have research papers. So there are ample amount of content available online and offline. So do not worry about the source. Think what is your area of interest and start reading about all those things. Again, I'm repeating this. Always make sure that you have a notebook and you are making a note of all the difficult words that you come across while you're reading. Identify the parts of speech of the words. See, this is something very, very important. You need to find out, you need to identify what are the parts of speech of all those words that you have read.
In that way, you will be able to identify, you will be able to learn the usage in a better way. For example, there is a word and you know that this word is an adjective. That means you know this word tells the quality of noun. So that way you will be able to, use it in a better way. You know a particular word is a verb, then you will be able to use in a better way. In that condition, it will help. Always, again, I'm repeating it, always make sure that you make short sentences with those words. Okay, so I hope this is clear to all of you. Everybody is clear with all these techniques and tips that I've given. Now we come to the bonus tip. सी मेक अ स्टैक ऑफ कार्ड्स, मतलब एक कार्ड की गड्डी बना लीजिए. ठीक है, पेपर को काट कर आप कार्ड की गड्डी बना सकते हैं. उसमें एक तरफ चार पांच, हर रोज चार पांच वर्ड्स लिखिए और दूसरी तरफ उनके मीनिंग्स लिखिए. इन पेपर के जो कार्ड्स हैं इनको आप जो है कैरी कर सकते हैं वेर एवर यू गो, और वहां पर जब भी आपको टाइम मिले आप पॉकेट से उसे निकाल कर उसे रिवाइज कर सकते हैं. इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिटेन दोज वर्ड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सी आई हैव डन दिस व्हेन आई वाज in my initial days of learning the vocabulary. At the same time, there are many quizzes available online and through apps, also on Oliveboard app, and mock test you all people have been writing. So mock test भी आप लगा सकते हैं. You can also write mock test and there also you can see कि क्या चीजें हैं और कैसे आप जो है उनका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, आपकी ग्रोथ क्या है. In that way you can judge them. So I hope you've liked this video. If you've genuinely liked it, please make sure to press the like button. Share with all those people whom you think deserve this video, they need this video and they have been asking कि कैसे vocabulary को improve करें. And make sure that you subscribe to Oliveboard's channel and do press the like button so that you never miss any update or any live class. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself and be safe.